Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, I'll be discussing visual reasoning here. Visual reasoning is a topic which is new to most of the students who are appearing for the exam here. The advantage with this topic is that everybody's on the same level, so nobody has a prior knowledge as compared to the sections like quant and verbal ability, right? So it gives you edge. If you have practiced this topic, you can really ace this section well. But the only disadvantage that comes with this topic is, let's say you're solving a particular question here and you're thinking in a particular direction for a very long time, and turns out that the logic is completely different, right? So you might end up wasting a lot of time in one question, right? So this is one disadvantage, major disadvantage that I feel that comes with this topic. So I strongly advise people to not spend a lot of time on one question. If you're not getting a question here, then it's better to move ahead to the next one. All right. Now, there is certain rules, not certain rules, I would say certain things that you can take care of while solving questions in visual reasoning, right? So what all I look at when I'm solving questions in visual reasoning, I'll just give you a brief here on them, and then we'll try applying those things, right? So I focus on particular items, right? I do not look at the entire diagram in a go. I try to pick few items and try to figure out the pattern through it. So I try to focus on particular items in the diagrams given, right? Second thing that I focus on is at times you have shaded and unshaded region, right? So I focus on shaded and unshaded regions, right? How is it going, right? Also at times you have alternate figures which follow the same pattern, right? Alternate figures. So I focus on that as well. At times you will see there's a rotation in clockwise or anti-clockwise direction of the objects, right? In the diagram, there is a rotation in clockwise or anti-clockwise direction, or it can be also at some specific angles, right? So this is something that I look out for if there is any rotation, right? It is also possible that the diagrams are, let's say, water image, right? Or let's say mirror image, or at times there is also a symmetry, right? There's also a symmetry as well in terms of the diagrams, right? It also happens that there's a removal and replacements of objects, right? Some object is removed, replaced with other objects, right? So there are a lot of factors that you should observe while solving the visual reasoning questions here. So these are few, guidelines that I have listed here. There are many more guidelines. We'll see them one by one once we are solving a lot of questions, that how do we actually do. But the most important thing is using focusing on particular items, and along with that applying option elimination. If you use option elimination, अगर आप option को eliminate करते जाओगे by picking particular objects, then I think this topic becomes a cakewalk. Alright, so let's get started with few questions here and try to figure out the answers here. So on the left we have four figures here, and we have to find the next one out of the given four choices here, right? Now, yes, one more thing that I can add here is the number of items. The counting of items is also a very important tool to solve such question, which I'm gonna apply in the very first question here that I just saw, right? Now if you see here, I could have seen the directions of arrows, how they are going, right? But the clear cut, the very first thing that will come into somebody's mind while seeing this diagram is, I can say 1 arrow, 2 arrows, 3 arrows and 4 arrows. So can I say whatever is the next figure should definitely have 5 arrows here, right? So the number of arrows is increasing by 1, right? Now if you observe here, this figure has 6 arrows, this figure has also 6 arrows, this one has 5 arrows, and this one has 3 and 4, 7 arrows. Now tell me, can I say straight away I can rule out option number A, B and D? Because I want a figure which comes with 5 arrows, right? And there's only one option which has 5 arrows, so my answer should be definitely option number C here. Okay? So I would have looked for the angle, whether the arrows, like first arrow is outward, then second is inward, then third is again outward, right? Then fourth is again inward. So I would have thought on those lines only when, I had two options with five arrows, but there's exactly one option with 5 arrows. So I can straight away say that my answer is option number C, right? Now,
in the second figure, if you try to look at this diagram in a whole, है ना, अगर आप एक साथ सोचोगे ना तीनों डायग्राम को पिक करने का, तो you'll face a lot of problem here, बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे सॉल्व करने में. तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया, फोकस ऑन पर्टिकुलर आइटम. कोई एक आइटम पिक कर लो. लेट्स से मैंने ये स्क्वायर को मैं अगर पिक कर लेता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में स्क्वायर मेरा यहाँ पे है, राइट. सेकेंड में ये ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये स्क्वायर उठ के यहाँ से इधर चला गया. फिर थर्ड में ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गया. तो अब यहाँ पे आने के बाद अब ये यहाँ जाना चाहिए, है ना, तो ये देखो यहाँ पे आ गया. फिर वापस ही यहाँ पे आना चाहिए, राइट. सो आई नीड अ आंसर, मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जिसमें मेरा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे हो, ठीक है. अब मेरे पास एक ही फिगर दिख रहा है बी, जिसमें मेरा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे, राइट. इसमें स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है. सो ए सी एंड डी कैन नॉट बी माई आंसर, राइट. एक आइटम पिक करके मैंने प्रूव कर लिया, ठीक है. इफ यू वांट आई कैन प्रूव इट विद सम अदर आइटम एज वेल. लेट्स से ये मैं नॉट इक्वल टू उठा लेता हूँ. नॉट इक्वल टू पहले यहाँ पे था, फिर सेंटर पे आया, फिर यहाँ राइट में गया, फिर वापस सेंटर में आया, तो अब वापस ये ऊपर जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे. देख लो मेरे आंसर में ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है. सो you if you focus on particular items then it becomes easier and couple it up with option elimination. ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ अगर आप उसको कपल अप करोगे तो इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है ना. सो दिस इज डन. सो द आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हियर. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. नाउ इन दिस क्वेश्चन देर इज नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो हो नहीं रहा. नंबर ऑफ यहाँ पे जो कोन्स एरोज जो भी बोलो, ठीक है, देर इज नो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट. ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है. अब देखते हैं, फोकस करते हैं. यहाँ पे तीनों ये कोन आर फेसिंग टूवर्ड्स द, आई कैन से द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है. पहले डायग्राम में द फर्स्ट कोन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, है ना. फिर दूसरे डायग्राम में द सेकेंड कोन ऑल्सो टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, एंड तीसरे डायग्राम में द थर्ड कोन ऑल्सो टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. अब जनरली, है ना, अब देखो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि ऐसे हम ऊपर से नीचे आए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन फिर हो सकता है थर्ड से वापस बैकवर्ड जाए, राइट. लॉट ऑफ पीपल कैन अप्लाई दिस लॉजिक, बट जनरली इन विजुअल रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना, एग्जाम में हमेशा गाइस सेम पैटर्न यूज होता है. द सेम पैटर्न इज रिपीटेड. इफ इट हैज बीन 1 2 3 then that 1 2 3 will continue, right. So now all the cones at the end of this is facing towards the east direction, right. Now the very first cone is gonna turn towards the west direction. Again it will follow a pattern of 1 2 3. So this will be the next diagram. After that the diagram will be something like this. Okay, the first cone, sorry, is gonna turn towards this, right. Then second, and then all the three will, I'll get back my original diagram like this. So my answer should have something like this here. This should be the diagram of my answer, right. The first cone, because 1 then 2 then 3, right. Now this will turn back, right. The very first will turn back, right. So it should turn in this direction like this, right, and the other two will remain like this, right. So this should be my required answer. Do we have it in any of the options? Yes, option number D is the same option that I have drawn here. So this is my required answer, ठीक है. So increment, decrement, water images, mirror images, I'll be bringing up lot of questions here. So you have to just observe the diagram, है ना. इसमें visualization बहुत होता है, strong होना चाहिए. Lot of people face difficulty in rotation and water and images like that. But once you have practiced, एक बार आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चंस की, then this becomes easy, right. And this is a scoring section. ये बहुत स्कोरिंग होता है. लोग क्या करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, लोग पूरा डायग्राम एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, विच इज अ वेरी इनकरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. यू हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर आइटम्स, राइट. अब जैसे मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो मैं से एक कोई चीज पिक कर लेता हूँ, ठीक है. अब ये एरो ना बहुत वियर्ड वे में रोटेट हो रहा है ना. देखो पहले यहाँ पे था, ऐसे था, फिर ऐसे हो गया. तो आई रादर पिक अप दिस लाइन इन बिटवीन, है ना. मैं इस लाइन को पिक करता हूँ. ये लाइन पहले ऐसे थी, ठीक है, फिर हल्का सा ये ऐसे रोटेट हो गई, राइट. फिर ये सेंटर में आ गई और रोटेट हो गई, है ना. देखो ये रोटेट हो रही है, राइट. ट्राई टू विजुलाइज. पहले ऐसे थी, फिर इसको हल्का सा रोटेट करके मैं यहाँ पे ऐसे लाया हूँ, ठीक है. दिस इज द लाइन नाउ, राइट. सॉरी माय बैड. समथिंग लाइक दिस, राइट. फिर ये डायगोनल बन गई, है ना. उसके बाद ये और हल्का सा रोटेट होकर ऐसे आ गई, ठीक है. तो कहना से अब ये नेक्स्ट क्या सेंटर पे आ जानी चाहिए ये लाइन. दिस लाइन शुड कम इन द सेंटर, क्योंकि अब ये रोटेट हुई तो ये ऐसे होगी रोटेट, राइट. सो यू हैव टू ऑब्जर्व दीज रोटेशंस, है ना. अगर इस लाइन को ऑब्जर्व करें, वापस से देखते हैं गाइस, ठीक है. एक बार फिर से इस लाइन को मैं ऑब्जर्व करता हूं, द लाइन इन द मिडिल. फर्स्ट इट वाज समथिंग लाइक दिस, राइट.
फिर ये ऐसे हल्का सा रोटेट हुई है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसको मान लो कुछ एंगल मान लो, जस्ट ऑब्जर्व द रोटेशन, है ना। फिर ये रोटेट हो और रोटेट करोगे इसको तो ये ऐसे सेंटर पे आ जाएगी, है ना। फिर और रोटेट किया तो ऐसे आ गई। अब अगला रोटेशन इसका क्या होगा, ऐसे आएगी, है ना। उसके बाद वाले में ऐसे आएगी, उसके बाद वाले में ये वाला डायगोनल बन जाएगा, right, the other diagonal, isn't it? So this is how it is going to continue, right? So I am looking for a figure which has the line in the center of the square, right? Now there's only one figure, that is figure number B, which has the line in the center of the figure, so that should be my required answer. I don't have to look for the arrows also. So just by picking one particular item in the diagram, I can answer my questions here. अगर multiple choices बनती हैं फिर उस केस में, then you could have picked up arrows as well, right? Arrow का भी आप rotation देख सकते थे, but not required here, ठीक है, it is not required. Alright, चलो let's move ahead to the next one now. Alright, now in this question, if you observe how is the arrow rotating here, ठीक है, अब हम arrow पे focus करते हैं, ठीक है, arrow कैसे rotate हो रहा है ये observe करते हैं. अगर एरो मेरा नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे आता तो वो 90 डिग्री रोटेशन होता, राइट, बट ये मेरा एरो ऐसे हो गया, राइट, दिस एरो हैज बिकम लाइक दिस. तो कैन आई से देयर इज अ रोटेशन ऑफ आई बिलीव 90 एंड एक्स्ट्रा 45, राइट. सो देयर इज अ रोटेशन ऑफ आई कैन से 135 डिग्री ऑलमोस्ट, राइट. दिस इज 135 डिग्री. नाउ फ्रॉम हियर if this arrow would have come here, this would have been a 90 degree rotation, but then there's an extra 45 rotation, so this is 135, so it is here, right. If it was like this, so this would have been a 90 degree in this here, but ये extra 45 rotate हो गया. तो अब यहाँ से अगर मैं इसको 135 rotate करता हूँ तो कैसे rotate होगा? This will be a something 90 like this, right? This will be 90 and then extra 45 more. So it should be pointing downwards. That is the first thing, right? So whichever diagram has a arrow pointing downwards, जिस diagram में भी arrow downward, southward direction में point कर रहा है, वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि हर फिगर में, हर consecutive figure में the arrow is rotating by 135 degree here, almost, right? That's the approximate value. So I can see there are two figures which is A and C which has arrow pointing in the southward direction. So I can rule out option number B and D for sure. ये दोनों तो मेरे आंसर नहीं हो सकते, right? Now if I have to now decide between A and C, तो मुझे अगला भी देखना पड़ेगा what is the next thing that is happening, right? अच्छा, अगर ये जो सर्किल है ना, if you look at the circle, can I say this is always to the right side of the arrow, right? ये right में है ना, यहाँ पे भी ये right में है, यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ है, right? It is rotating, जैसे से ये arrow rotate हो रहा है ना, ये अपने साथ साथ इस सर्किल को भी रोटेट कराता चला जा रहा है. तो अगर ये ऐसे रोटेट होके आया तो सर्किल इसके इधर आना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी टू दिस साइड ऑफ दिस, राइट. सो ऑप्शन सी हैज इट टू द दिस साइड, राइट. ये एरो ऐसे रोटेट कर रहा है इसको, राइट. सो आई थिंक आंसर शुड बी डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए. सी कैन नॉट बी माय आंसर. वाई? बिकॉज द एरो इज रोटेटिंग द सर्किल विद इट से. ऐसे कह सकते हो कि ये पुश कर रहा है सर्किल को अपने साथ. पहले ये ऐसे किया तो ये यहाँ पे आ गया, फिर इसको और रोटेट किया यहाँ पे आ गया, फिर इसको और रोटेट किया यहाँ पे आ गया. अब ये सर्किल, ये एरो ऐसे रोटेट होकर आएगा और सर्किल इसके इस साइड पे रहेगा. सो माय करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए. Right. So these are pretty, moderate level questions, not very difficult, typical CET level questions, but questions और complicate हो सकते हैं, but you don't have to be, scared of these questions, right? You just have to pick one item at a time. कोई भी एक item pick करो, उसके basis पे solve करो, ठीक है ना? अब जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करूं तो मेरा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन का क्या है ना, कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, दिस लाइन दैट आई एम ड्राइंग एट द मोमेंट, ये हर फिगर में दिख रही है मुझे. येस और नो? दिस इज अ प्रोमिनेंट लाइन विच कैन बी सीन इन ऑल द फिगर्स, राइट, विच कैन बी सीन इन ऑल द फिगर्स हियर. तो मतलब एक चीज तो फॉर श्योर है कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें ये वाली लाइन तो आनी है डेफिनेटली, ठीक है ना. अगर ये वाली लाइन डेफिनेटली आनी है तो डी कैन नॉट बी माई आंसर, है ना. डी कैन नॉट बी माई आंसर, ठीक है. डी कैन नॉट बी माई आंसर फॉर श्योर, राइट. डी मेरा आंसर रूल आउट हो गया. ए में वो लाइन है, बी में भी है, सी ओवरलैप हो सकता है, सो आई कैन नॉट से, ठीक है. अब सेकेंड लाइन पे फोकस करते हैं, द ब्लू लाइन, राइट, द लाइन दैट आई एम ड्राइंग इन ब्लू हियर. पहले ये लाइन ऐसे थी, ठीक है, दिस लाइन वाज लाइक दिस, राइट. फिर ये ऐसे हो गई, राइट, इट हैज बिकम स्ट्रेट. तो कैन आई से दिस इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री, है ना. 45 डिग्री इज रोटेट हो गई. फिर वापस से ये जब 45 डिग्री रोटेट हुई इन द नेक्स्ट फिगर, ये इसके साथ ओवरलैप कर गई, राइट, दिस बिकम ओवरलैप विद दिस. उसके जब वो नेक्स्ट 45 डिग्री रोटेट हुई तो वो स्ट्रेट हो गई, है ना. अब वो अगला जब 45 डिग्री रोटेट होगी तो कुछ ऐसे हो जाएगी, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, राइट. सो माय आंसर शुड लुक लाइक दिस डायग्राम, द वन इन रेड लाइन and the blue line, this something like this, right. So can I say option B is the correct one? Option B seems to be the appropriate option here, right. So that should be my required answer.
राइट. इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल ओवरलैप अगेन, राइट. तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो यू हैव टू फोकस ऑन कि लाइन कैसे रोटेट हो रही है. ये रोटेशन सीखना बहुत जरूरी है आपको. ठीक है. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, एक बार मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ. ये रोटेशन वाली लाइन जो थी मेरी, है ना, लेट्स फोकस ऑन दिस लाइन अगेन, द लाइन दैट इज रोटेटिंग, है ना. तो ये ब्लू लाइन पहले ऐसे थी, राइट. देन इट हैज बिकम स्ट्रेट. सो इट वॉज समथिंग लाइक दिस एंड नाउ इट हैज बिकम स्ट्रेट. तो ये इतना डिग्री रोटेट हुई ना, ये ऐसे रोटेट होगी. इसको मान के चलो कि ऐसे रोटेट हो रही है. तो ये कितना डिग्री, ऑलमोस्ट 45 डिग्री है ना. अब ये 45 डिग्री से अगर इस स्टेज पे वापस से अगर 90 होती तो यहाँ पे आ जाती, है ना. 90 डिग्री मतलब पूरा स्ट्रेट हो जाए. 45 रोटेट किया तो ये इतना आएगी, है ना, नेक्स्ट फिगर में. तो देखो 45 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई, राइट. फिर उसके बाद जब ये अगला 45 रोटेट होगी, ठीक है, इट बिकेम स्ट्रेट फर्स्ट, फिर ये यहाँ पे ऐसे आ गई, है ना. अब जब अगला 45 रोटेट होगी तो स्ट्रेट हो जाएगी. तो ये स्ट्रेट हो गई. देखो यहाँ पे अब स्ट्रेट होने के बाद अगर 90 रोटेट होती तो ऐसे आती, बट ये अब 45 रोटेट होगी तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस. तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, है ना. और एक वो प्रोमिनेंट लाइन मेरी थी ऐसे वाली. सो दिस शुड बी माय आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट. सो अगेन यू नो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विजुअल रीजनिंग, है ना. अच्छा, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, राइट. अब इस क्वेश्चन में गाइस मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या एक पैटर्न दिख रहा है. ऑल्टरनेट फिगर मैंने बताया था तुम लोग को, एक पॉइंट है ना. देखो इसमें सर्किल है, फिर इसमें सर्किल है, फिर जो अगला फिगर आएगा उसमें सर्किल तो डेफिनेटली होना चाहिए. 3 ऑप्शन में सर्किल नहीं था. आई कैन स्ट्रेट अवे रूल आउट एंड दिस शुड बी माय आंसर. क्लियर कट, है ना. एंड इफ यू वांट यू कैन लुक एट द अदर पैटर्न ऑल्सो. दिस कोन हियर, द एरो इज पॉइंटिंग वेस्ट, फिर नॉर्थ हुआ, फिर ईस्ट हुआ, फिर साउथ हुआ. वापस से वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए. लुक एट दिस ऑप्शन, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हियर. ऑलराइट. ठीक है. नाउ दिस वन हियर, इफ यू ऑब्जर्व, upwards then downwards, again upwards then again downwards. So next it should be upwards, है ना. Alright, so that is the first thing. So upward it should be pointing. That means A and C are definitely gone, right? अच्छा, अब ट्राइंगल पे फोकस करते हैं. पहले ट्राइंगल डाउनवर्ड्स था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया. अब इट शुड बी डाउनवर्ड्स, राइट. नाउ अच्छा, डाउनवर्ड्स तो होना चाहिए. अब देखो यहाँ पे ये भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट द ट्राइंगल वाज फेसिंग अपवर्ड्स इन द फर्स्ट 2 फिगर्स, राइट. रेस्ट 2 फिगर्स में ट्राइंगल इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, राइट. सो अगेन इट शुड बी फेसिंग अपवर्ड्स. सो इट शुड बी अ अपवर्ड फेसिंग ट्राइंगल लाइक दिस. सो इफ यू सी, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर विच मैचेस माय रिक्वायर्ड पैटर्न हियर. ठीक है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें ऑब्जर्व करना, है ना. दिस इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर यू वेर यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ विजुअल रीजनिंग वर्क्स. In the next video, I'll be coming up with some more complicated figures and I'll teach you the same tools. I'll use the same set of tools that I have listed on the very first page of this video. I'll be using them to solve complicated questions as well. And trust me, you'll be able to pick it up like anything. एक बार अगर आपने ये चीजें ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, है ना. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब आप समझो. सो आई प्रोबेबली कम अप विद अ वीडियो विच हैज क्वेश्चंस ऑन वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ऑल्सो, राइट. सिमेट्रिसिटी ऑफ द डायग्राम, लाइक जैसे यहाँ पे सर्किल है, ये ऑल्टरनेट फिगर्स में चल रहा है, तो मुझे पता है नेक्स्ट फिगर में सर्किल आना ही आना है. सो आई कैन स्ट्रेट अवे मार्क दिस आंसर. ठीक है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हियर, राइट. सो I'll be coming up with one more video on this where we'll be practicing some questions, and I hope you guys have understood this concept here of visual reasoning, how to approach such questions, how to tackle them, and we'll be doing a lot of practice. Our CT batch is already running. Still, it's not late. If you feel that you need the coaching for this exam and you want to get into colleges like JBIMS and Sydenham, and you think that we'll be able to guide you well, then please feel free to join our batch. The details are mentioned below. You can reach out to our website, our contacts for any kind of inquiries. You can let me also know in the comment section below. अगर आपको कुछ भी doubts हैं regarding the course curriculum, regarding the fee structure, regarding any XYZ information that you need, and also the questions that we discussed today. All right. Thank you.